कि लड़की को शक होती थी कि इसका किसी और महिला के साथ में संबंध है। इसके कारण इनके बीच में बातचीत होती थी और झगड़े होते थे, मारपीट। दे डोंट हैव एनी कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही वाज इन्वॉल्वड विद एनीबॉडी एल्स। वो लड़की को शक होता था कि इसका किसी साथ में इन्वॉल्व है। शी हरसेल्फ वाज वर्किंग एज अ नर्स। क्या मृतका की गला दबाने से किया जाना संभव है? स्पष्ट अभिमत देवें। The cause of death asphyxia consequent on manual strangulation is unlikely in this case. इन्हें स्पेसिफिक पूछा तो उसने जवाब दिया ये वाला। Meet these lordships. Malud, an offence has been brought registered under section 498A 306 of the Indian Penal Code against the present applicant. Investigations over charge sheet has been filed. The death is beyond a period of 7 years. It is alleged that the marriage had taken place in the year 2014. She is said to have died in the year 2023. Now, after that, initially no allegations were made. The death had taken place on 7/6/23. The parents and other persons were present at the time of inquest. No allegations were made. Thereafter, after 2 months, 8 days, they made allegation कि लड़की को शक होती थी कि इसका किसी और महिला के साथ में संबंध है। इसके कारण इनके बीच में बातचीत होती थी और झगड़े होते थे, मारपीट होती थी। ये कह के उन्होंने एलिगेशन लगाया। They don't have any conclusive proof that he was involved with anybody else. वो लड़की को शक होता था कि इसका किसी साथ में इन्वॉल्वमेंट है। She herself was working as a nurse. Yes. FIR by the prosecution that उसमें फांसी लगाता खत्म। The FIR itself, my lord, the cause of death as asphyxia subsequent upon manual strangulation is likely in this case. और जो उसका पीएम है सर, उसमें भी केवल चिन्ह में 2 ऐसे निशान हैं, अराउंड द नेक कोई निशान नहीं है। जब तक लाइकली है ना, लेकिन वो पीएम में भी आपने चालान ही 306 का पेश किया, 302 का चालान नहीं पेश किया। आपके अनुसार उसकी एंटीमॉर्टम है, एस्फिक्सिया है। पेरेंट्स ने सर इतनी शिकायतें की, डॉक्टर कह रहे हैं सर कि उसके अराउंड द नेक एस्फिक्सिया मतलब उसके कोई लिगेचर मार्क नहीं है। अब पीएम दे रहे हैं, लेकिन वो 302 की जगह 306 में चालान पेश किया। तो ये भी नहीं मालूम कि चालान पेश हमारे तरफ से तो लगातार दरखास्तें जारी है कि डॉक्टरों की अगर ऐसी ओपिनियन है और उस पर लिटरेचर मार्क नहीं है तो इस पे जांच होना चाहिए। इस पे ये होना चाहिए, पूरी मेडिकल बोर्ड को जांच करना चाहिए। ये नहीं है तो ये उसके हस्बैंड ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या। The postmortem was conducted by 2 doctors. It's not one doctor who conducted the postmortem. अब देखो सर, ये में भी है सर। बताइए पीएम बताइए सर। ये बातें रोज आ रही हैं, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। कॉल योर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, पीएम रिपोर्ट बताइए। उसके बाद भी आपने 306 में चालान पेश किया। नहीं, स्ट्रैंगुलेशन नहीं आया। It is not a strangulation. In my opinion, the cause of death is asphyxia, which is caused by. It is not necessary always. In my opinion, that is it. कहाँ पे बोल रहे हैं आप? इसमें तो कुछ नहीं आया। Opinion. The cause of death is asphyxia consequent upon hanging. In this case, cannot be ruled out. The cause of death is asphyxia consequent upon manual strangling is unlikely in this case. That is the specific opinion given by the doctor. ये likely, unlikely है। Unlikely is unlikely is unlikely. Likely तो नहीं है, इसमें लिखा Unlikely. strangulation is unlikely. Yes. आपके पास क्या है? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ। कहाँ पे पढ़ रहे हैं? जहाँ पे वो उसकी बॉडी कंडीशन। यस यस, पढ़ी। Angle of mouth 4 centimeter contusion on the below chin. No ligature material present on the body around the neck. No ligature mark present around the neck. उसके ऊपर ऐसे dry saliva discharge present on the right side of angle of mouth. Now, according to Modi, this is the surest sign of hanging. But doctor himself is saying that it is unlikely that it is. रिपोर्ट है सर, शुरू में कह रहे हैं सर, फिर पीएम में सर ये वाली बात आ रही है। ये तो unlikely कह दिया है इन्होंने ओपिनियन में। रिपोर्ट जब प्राप्त हुई सर, उसके बाद हमने शिकायतें की। हमने इस पर बारीकी से जांच की मांग की।
पुलिस ने अपनी That only opinion was called. और उसी के बाद में सर एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई और फिर ये ओपिनियन सीख कराया गया। जब आपने पत्र लिखना चालू किया उसी के बाद में सब चीजें ओपिनियन सीख कराया गया। To rule out that any influence or any hanky-panky play has taken place or not. That is the reason why the second opinion was sought. ये डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं लिखा है. He says it cannot be ruled out. He does not say that it is hanging. No, what I हमने सब फिर उसके बाद He only says that cause of death as asphyxia consequent upon hanging in this case cannot be ruled out. the cause asphyxia consequent upon hanging फिर इन्होंने पूछा क्या मृतका की गला दबाने से किया जाना संभव है, स्पष्ट अभिमत देवें. The cause of death asphyxia consequent on manual strangulation is unlikely in this case. इन्हें स्पेसिफिक पूछा तो उसने जवाब दिया ये वाला. और मेरा एक निवेदन था, ये उसी अस्पताल में नर्स थी जिस अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ. Applicant has filed. First No, this application. can be a case whereby it is the case of partial hanging also. Under section 439 of Code of Criminal Procedure for grant of regular bail. Learned senior counsel appearing for applicant submitted that death has taken place after about 9 years of marriage. Full stop. There was delay in lodging of FIR. Complaints regarding harassment and suicide was made after about 2.5 months of inquest. It is further submitted that applicant was having illicit relationship with some other woman, due to which there was fight between applicant and his wife. Said fact may have resulted in suicide. Full stop. Considering aforesaid circumstances of the case, applicant be released on regular bail. Government advocate as well as counsel appearing for objector oppose the application for grant of bail. It is submitted by him that no ligature mark was found on the neck. It is further submitted that prosecutrix was strangulated to death and it is case of murder. Full stop. Heard the counsel for the parties on going through post-mortem report, doctor has opined that strangulation, doctor has ruled out manual strangulation as cause of death in his opinion given to police. Considering aforesaid facts and circumstances of the case, application is allowed. Applicant be released on bail. 50,000 one surety. Personal.